Good morning, 10th class. Today our chapter is chapter number 2. Name of the chapter is Acids, Bases and Salts. And total 4 topics are there. We have already completed up to 2.2 and today is the turn of 2.3. How strong are acid or base solutions? So this one is our topic, how strong are acid or base solutions. So first is about subtopic. Total 7 subtopics are there. We have already we are completing here. Today we are completing one by one all of them. Number first is introduction, then pH paper, importance of pH in our daily life, then about additional information and some naturally occurring acids, and then at the end we have assignment number 3. So number first is about introduction. This one is acid base indicators. What do you mean by acid base indicators? Indicating something about acid or base, whether the particular solution is acidic or basic. That indicator, right, is known as indicator. Indicator word आपने पहले भी सुना होगा in case of vehicles, right, that indicates the direction. But here indicators are used for judgment about acidic or basic solution, right? So it can be used to distinguish between an acid and a base, right? Next we have a dilution and decrease in concentration of H plus or OH ions in a solution. आपको पता है अगर आपके पास एक 100% acidic property वाला एक solution हो and if you are adding water in that particular 100% concentrated acid, then what will happen? The number of hydronium ion decreases. Okay, कम हो जाएगा. अगर वो 100% है तो अगर आपने उसमें वाटर मिला दिया तो क्या होगा? वो कम हो जाएगा. अब कितना कम होगा, राइट? क्या हम ये पता कर सकते हैं? मीन्स नंबर एग्जैक्ट 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, कितना होगा? 1 होगा या 2 होगा? व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नंबर? आप फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कैन वी जज ऑन द बेसिस ऑफ दिस नंबर, कैन वी जज दैट द पर्टिकुलर सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, right? So what is your answer? Your answer is yes, right? So but how? We can use this by using universal indicator. Universal indicator shows different colors at different concentration of hydrogen ions in a solution, right? So this is done, means that number we can get by using universal indicator, and universal indicators gives different colors for different concentration of hydronium ion. Understood? So this universal indicator is pH, right? P stands for power and H for hydrogen. So here we have a scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale. In German, P stands for potential. Potential का मतलब होता है power and H for hydrogen. Range कहाँ से कहाँ होता है? 0 to 14. And here we are moving with next slide. Just look here the diagram and then we will deal with number 4th point here. कहाँ से start होता है? 0 से. आप देखो कि 0 है और कितना ज़्यादा blue line है. Blue line is for acidic nature, right? For this slide only, it is for acidic nature. Acidic that means indicates hydrogen ion concentration. आप देखेंगे धीरे धीरे it gradually decreases, right? And pH number क्या होता है? हाइड्रोजन आयन का pH नंबर ग्रेजुअली इंक्रीजेस, राइट? 0 से 7 हुआ, 7 के बाद बढ़ते बढ़ते वो कितना होगा? 8 9 के बाद अप टू 14, राइट? एंड एट 14 द अमाउंट ऑफ वाइट कलर इज मोर एज कम्पेयर टू ब्लू कलर. That means hydroxide ion is more as compared to hydrogen ion. Understood? So here then we are discussing number 4th point. In simple words, it is a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH. Just look here. pH value is 0 and hydrogen ion concentration is more, right? Here when pH is 7, hydrogen ion concentration is less. So pH value decreases, hydrogen ion concentration increases. That means they are inversely related. pH value and hydronium ion concentration, their value, they are inversely related. एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है. Next we have about solutions. So we have 3 types of solutions: acidic, neutral and basic. Acidic means less than 7 pH,
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा. 7 is for neutral, that means equal concentration of hydrogen ion as well as hydroxide ion. Then basic, more than 7, an increase in hydroxide ion concentration in a solution. Right, then next we have number third subtopic, pH paper. So here is the pH paper. You can guess, just look here, 0 से start होता है और कहाँ तक जाता है, 14 तक. And this one is for gastric juice. Right, its value is 1.2. Where it is present? It is present in our stomach. Then lemon juice, जो soft drink हम पीते हैं अपने घर में, what is the pH? 2.2. It is also acidic. Then about pure water or blood, pH is 7.4. More or less it is tilted towards basic character. Then milk of magnesia, pH is 10. Milk of magnesia, other name is magnesium hydroxide, right? Then sodium hydroxide solution, pH is about 14, so maximum, right? So this is whole about pH paper, and this is the colorful strip, right? Then next we have number 4th subtopic, importance of pH in our everyday life. So here number first is our working range of our body works within the pH range of 7 to 7.8. हमारा बॉडी इसी pH range में काम करता है. And then number second is when pH of rain water is less than 5.6, it is called acid rain. राइट, आपको पता है वाटर का पीएच अभी हमने थोड़ी देर पहले कितना डिस्कस किया था, 7.4. बट इफ़ द पीएच वैल्यू डिक्रीजेज अप टू 5.6 और बिलो दैट, देन द वाटर टर्न्स इनटू एसिड बिकॉज इट कंटेन्स एसिडिक प्रॉपर्टी, इट हैज़ मोर एसिडिक प्रॉपर्टी, सो इट टर्न्स इनटू एसिड रेन. एंड व्हेन दिस एसिड रेन मिक्सेस विथ वाटर, when this rainwater mixes with water, then the river water also turns into acidic. Okay, it also converts into acidic character, and as you know that the acids are not good for the survival of aquatic plants as well as animals. Then next number second is about plant require a specific pH range for healthy growth. As you know that we work between a range of pH. In the same manner, for the proper growth of plants, they also require a range of pH. Some of the plant grows in acidic range. कुछ प्लांट्स होते हैं जो न्यूट्रल में ग्रो करते हैं और कुछ प्लांट्स होते हैं जो बेसिक कंडीशन में ग्रो करते हैं. तो हम कैसे पता लगाते हैं? बाय यूजिंग द सॉइल वेयर द पर्टिकुलर प्लांट्स आर ग्रोइंग. अगर सॉइल हमारा एसिडिक है तो हम ऐसे प्लांट्स लगाएंगे जो एसिडिक सॉइल में ग्रोथ करते हों, और अगर बेसिक है तो ऐसे प्लांट्स लगाएंगे जो बेसिक को फेवर करते हों, बेसिक में अपना ग्रोथ दिखाते हों. और अगर न्यूट्रल है तो ऐसे प्लांट्स को हम वहाँ पे लगाएंगे, उस सॉइल में ऐसे प्लांट्स को लगाएंगे जो फिर न्यूट्रल में सर्वाइव कर सकें. Next we have this diagram. This diagram is related with the stomach, okay, and stomach is related with during indigestion the stomach produces too much acid. और acid अगर बहुत ज़्यादा present हो जाए stomach में तो क्या हो जाता है? पेन एंड इरिटेशन. एंड स्टमक एसिड है तो आप क्या करेंगे? यू मस्ट यूज़ बेस. वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ बेस इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. आप उसे यूज़ करते हैं एंड यू आर यूजिंग विच प्रॉपर्टी? न्यूट्रलाइजेशन, राइट? यू आर न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक करेक्टर बाय यूजिंग बेस, and you after this you get relief from acidity. Then next we have pH change as the cause of tooth decay. So as you know we have a tooth, and on the covering of tooth, the upper part of tooth is known as tooth enamel. It is the hardest substance, and hardest substance, then what one of the property of this enamel is it does not dissolve in water. वाटर में नहीं घुलता है. बट अगर हमारे दांतों का pH लेस देन 5.5 हो जाए तो फिर इसमें कोरोजन हो जाता है, राइट? अब ये क्या होता है एक्चुअली में? व्हेन यू ईट एनी फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, एंड यू नो दैट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ, right? So this food this carbohydrate or this sugar converts into acid by bacteria. और अगर आपके माउथ में एसिड बन गया तो एसिड आपका जो वर्किंग रेंज है कितना है? 7 to 7.8, राइट? अगर उसमें एसिड बन गया तो क्या करेगा? लोअर करेगा पीएच को. जो 7 तक था वो क्या करेगा? 6 करेगा, देन 5.5, एंड उससे भी अगर बिलो कर दिया उसने, देन व्हाट विल हैपन? द प्रॉपर्टी ऑफ टूथ एनामल डज नॉट वर्क.
नहीं काम करेगा. एंड इफ इट इज़ नॉट वर्किंग दैट मीन्स देयर इज़ corrosion, देयर इज़ कैविटी इन द टूथ इनामल, राइट. वो हट जाएगा अपर लेयर एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ कैविटी. सो हाउ कैन यू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम? बाय वॉशिंग योर माउथ. यहाँ पे आपने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया? डाइल्यूशन. आपने क्या यूज़ कर दिया? डाइल्यूट कर दिया. तो जैसे ही आप ऐड करोगे वाटर, खाना खाने के बाद अपना माउथ वॉश करते हैं, तो आपने क्या कर दिया? जो pH 5.5 तक पहुँच गया था, आपने उसको क्या किया? उसके pH को आपने बढ़ा दिया, उसके pH वैल्यू को बढ़ा दिया. अगेन आपने क्या किया? 5.5 से आप 6 ले गए, 6 से 7, अगेन जो हमारा वर्किंग रेंज है वहाँ तक ले गए. तो इस तरीके से बाय यूजिंग डाइल्यूशन यू कैन जस्ट गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम. नंबर सेकेंड इज़ बाय यूजिंग बेस. अगर आप बेस भी यूज़ करेंगे, बेस दैट मीन्स टूथपेस्ट. आप टूथपेस्ट यूज़ करो, इट कंटेन्स बेस, सो अगेन it increases the value of pH. Then next we have number 5, self-defense animals and plants through chemical warfare. So one of the example of animal is bee sting. आपने देखा होगा when any bee stings on your hand, right, then there is pain and irritation. This is because of methanoic acid injected by the bees. क्या आपके हाथों में खुजली होने लगती है अगर मधुमक्खी काटे तो, राइट. फूल भी जाता है. क्यों जाता है ऐसा? बिकॉज ऑफ मीथेनोइक एसिड. वो जो मधुमक्खी है आपके शरीर पे क्या डाला है उसने? मीथेनोइक एसिड. अगेन क्या है वो? एसिड. सो इट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, right. So for normal human being, what can you add there? Base. So after using base, it neutralizes acidic property. Then next is stinging here of nettles leaves inject methanoic acid causes burning pain, राइट. ये आपका प्लांट का एग्जाम्पल है जिसमें आप नीटल्स के लीव्स को टच करते हैं तो क्या होता है, ये अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे विद अवर नंबर 5th सब टॉपिक एडिशनल इन्फॉर्मेशन. जस्ट लुक हियर दिस plant, green color plant, and these are spines on the plant surface. When you touch these spines, what will happen? Again there is pain and irritation, right, because of acid is injected on your body. That particular acid is methanoic acid. And what will happen? Again with a common science person, what you apply? Base, and this process is known as neutralization. Very good. Next is some naturally occurring acids. So examples are like vinegar, it contains acidic acid. Orange में क्या होता है? Citric acid. Tamarind, imli, tartaric acid. Tomato, what is present? Oxalic acid. Then in case of curd, sour milk, lactic acid. Then in lemon, citric acid. And sting, methanoic acid. Nettle sting, methanoic acid. Then at the last we have assignment number 3rd, and for this science textbook, page number 28, question number 1, 2, 3, 4, and page number 34, question number 1, 3, 4, and page number 35, question number 9, 11, 12, and 14. This all you have to complete. In your science copies and submit in Google Classroom. Thank you. This is the end of our today's video session. Thank you.